गया है। पिछले 2 वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई केंद्रित और ठोस कदम उठाए हैं। बेहतर सिंचाई सहायता और किसान केंद्रित पहलों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही निवेश प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के जरिए औद्योगिक विकास को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही आईटी, व्यापार, पर्यटन और अन्य उभरते क्षेत्रों में वृद्धि के साथ सेवा क्षेत्र का भी विस्तार जारी है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए इन समन्वित प्रयासों ने राज्य की मजबूत और निरंतर आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। The government has adopted the Cure Pure Rare framework as a polycentric strategy to ensure balance and inclusive development across the state, moving beyond the Hyderabad-centric growth model. Under this approach, the core urban region core will evolve into a net zero, knowledge-driven global hub. The peri-urban region will emerge as a manufacturing and logistic engine, and the rural agri-region will be revitalized through climate-smart agriculture, ecotourism, and food processing, together creating a unified, resilient, and future-ready state economy. We are operationalizing the core urban region economy model to ensure sustainable and equitable growth. Telangana is urbanizing rapidly as urban population in projected to reach 53.8% by 2031. In view of this, recently my government has trifurcated the GHMC into 3 separate identity: Cyberabad Municipal Corporation, Malkajgiri Municipal Corporation, and the reconstituted GHMC. This restructuring of the municipal area will enable closer supervision of civic services, quicker grievances redressal, improved infrastructure planning, and more balanced urban development. It will strengthen democratic decentralization by bringing urban governance closer to the people in the true spirit of the 74th Constitutional Amendment. The government also framework including HM, WSSB, and Hydra. The enhanced law enforcement and administrative efficiency, and government has reorganized the Hyderabad police jurisdiction into 4 commissionates: Hyderabad, Cyberabad, Malkajgiri, and the newly established
future city commissariat across the metropolitan region. क्योर क्षेत्र को प्रदूषणकारी उद्योगों से मुक्त करने के लिए सरकार ने HILT नीति के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ORR के बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और इलेक्ट्रिक वाहनों को लाइफ टैक्स से छूट देने का आदेश जारी किए हैं। इसकी शुरुआत के तौर पर सरकार क्योर क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। हैदराबाद झीलों और चट्टानों का शहर है और सरकार मुख्य शहरी क्षेत्र की सभी झीलों और तालाबों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। नवनिर्मित हाइड्रा ने 1045 एकड़ से अधिक सार्वजनिक भूमि और जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की शहरी संपत्तियों को सुरक्षित किया गया है। बतुकम्मा, कुंटा, नल्ला चेरू और बामरुक उदुद्दीन और दौला झीलों को हाल ही में मुक्त करा करके उनका पुनरुद्धार किया गया है। ये सभी मुक्त कराए गए तालाब विकास केंद्रों के रूप में उभरेंगे, जो एक फलते फूलते झील अर्थव्यवस्था लेक इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे और महिलाओं को अस्थायी आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाएंगे। The government is revitalizing Hyderabad ecological corridor through the 55-kilometer Mushi riverfront transformation project extending from the Usman Sagar and Himayat Sagar reservoir to Gandhi Sarovar. Phase 1 of the project is currently under implementation as part of Mushi rejuvenation. Godavari phase 2 and 3 projects are already sanctioned and work in brisk progress. This project will provide 2.5 TMC water for Musi rejuvenation by linking Usman Sagar and Himayat Sagar and 300 MGD drinking water to Cure area. As a part of Musi rejuvenation by 45 STP are operational and 39 STP are under construction. The treated water will be supplied to a data center, landscaping of ORR, other industrial use and construction industry. The government is undertaking the prestigious Gandhi Sarovar project at the confluences of the Musa and Isha. Revaluate is envisioned as a world-class experimental center dedicated to the teaching of Mahatma Gandhi.